Sir, just the sculpture. So this sculpture was sponsored by it. It was for the season sculpture. That was done by Indian artists and UK artists. And this idea has come from that first Maharaja of Mysore. Actually, they had this idea of first violin. Based on that, actually, they took a photograph. The first thing was published. They have this mark also. First reference of that in that type. So from that it is more inspired. Yeah, this is one of the famous. Okay, so we interviewed the Maharaja family also, the present Maharaja also. We took the special interview for that. And the whole story narrates that how this thing happened. So people were using at that time also, the ancient time also. Symbolic direction of that. So we come there. Basically, section wise, what we have done. Section wise is there where we are talking about the starting of the vaccine. And then actually this is the story of the vaccine, how the vaccines were made, especially in India regarding this, and also other From here, the section starts that virus which is there will change the world. But these people are not aware that what kind of other viruses are there. Yeah, it's a very interesting for them also, and we have also connected that. People send their trainees, doctors to them, and they were so excited that okay, I can learn so many things from this exhibition. So I think I will request you to please send the doctors here. They can go through this program. And then since we are collaborating with Welcome Trust and the scientific group, so they provided all other things we required. You can see the scale of viruses also when we are here. How much, what is the size of the virus? This is zooming. Zooming is, yeah. And on the base panel also you see that there are different kind of viruses. Science of the virus. So we have 2.75. Now the present I think is going. And here is body industries, how our body is secured by many other organisms. And there are different kinds of viruses. Happening all over the country. Yes. But we just separate. This is about all about the science of virus. That is good. So where it affects which parts of the and then we had how the Before vaccination, how it was started, this para explains about variolation. and the you can actually go inside. You also. You can just go inside and then see how the ear wise it happens. So if you touch on that, in this everything is there. And in fact, in 17th century we had this.
and then in China. Smallpox. Yeah. So here you can know about what is the composition of vaccine. So I mean different type of vaccine. You know about because they love and these are the original samples collected from this. And different hospitals we have outsourced this. But what and then what are the components of it? You should know that inside what is there. There are preservatives, there are adjuvants. Adjuvant is that because the cell and that was very important that global information was there and it was doing online, everything was being done online. So that was given by the release of these vaccines. WHO vetted that. After that, all the sequences started. That was the sequence of because it happened, yeah. Sequence of anybody who wants to know, we have all QR code also. You can see if you miss out, then it becomes Yeah. And then this is what is the immune system. So it is our body guards. So body guards is there to secure our body from the attack of any other organism. Indian spices. Yes. It takes what plan is that Last question here. there is still some people they are still very Yeah, yes. But they are now going to the doctors. yeah, but now you know only they then check like the approvals from them. And then sir, because again it's a global effort. Yes, the whole scientific community came together. The vaccines were shared, placebos were shared, the data were shared, And these are the only volunteers who they are interviewed. They were actually at vaccine trial. So we have those into these hospitals. in India, sir, the population is 1.4 billion, and we have given 2.7 billion. So maintained in a particular temperature. So that is why it is called food chain. I mean, if you take a look at the entire registration and management and all those things. So it was a Herculean job as well as the population of our country was is very huge. Vaccine manufacturing there, but how they is distributed at the remotest part. Some people charging like anything. UK and US. And I included him also, and he included that he was the 19th in the queue. What a talent he became the first one. Despite being 19, he was and she's Margaret, so in UK she was the first person. Then afterwards, so much. And that was the
ICMR data or all those things is there in this. You have all. You go and you write a program and tag off the brand and afterwards you come back again. These are some of the very interesting cover. Then proceed. You ask 3 questions to the visitor. Correct. Where the data is getting gathered. You can take some pictures. Just any message or anything. Message back to yourself or someone else in 2020 when the pandemic was there. What message you would general awareness आतमध्ये जायचं आहे का? to go inside. अंदर जाना है? नहीं अंदर नहीं. फ्लॅग अप करेल. We have lot of गाडीमध्ये बसा, तुम्ही पावर काढून घ्या पटकन. गाडीमध्ये बसा. व्हिडिओ आहे ते गाडीवर आपण सगळे बेसिक प्रेस आणि तालुका प्रेस. So we are already, everyone is familiar with the entire system. So it's just an addition to our number of users. very good response for this in Delhi region. हां. Haryana. On behalf of Raman Science Center and Planetarium, Nagpur, I welcome you all. A very good morning. I request Dean, Government Medical College and Hospital, Nagpur, is the chief guest for today's function. Please come on the dais. Dr. Atul Vaidya, sir, the guest of honor. Okay. Sir. I request A.D. Chaudhary, sir, the Director General of National Council of Science Museums, to please come on the dais. Sir, move from that way. And Shri Samrendra Kumar, sir, Deputy Director General, National Council of Science Museums. Please come. Please settle down. May I request Atul Vaidya, sir, the Director, CSIR Niri, to please come on the dais. Dear students, please put your hands together for sir. Please come, sir. Respected dignitaries on the dais, dignitaries of the dais,
invitees, representatives from press and electronics media, members of Raman Science Center, Nagpur, staff of Raman Science Center, respected teachers, and my dear students from CDS, Rajendra High School, and Pandit Bacharaj Vyas Vidyalaya. A very good morning to everyone. We are all gathered here in this auditorium of Raman Science Center for the inauguration of an international traveling exhibition, Vaccines Injecting Hope, and flagging off of mobile science exhibition bus. Just now, the honor has been done by the dignitaries, and the bus will take the message of this exhibition to the rural areas of Vidarbha region. The exhibition, it is being developed by National Council of Science Museums in association with Science Museum Group London, Wellcome Trust, Indian Council of Medical Research, and British Council. Before we proceed further, we'll welcome our respected guests, and it's a proud privilege for us to welcome the dignitaries on the dais with potted plant. And for that, I request Rujal Kanse, the student of 11th class from CDS school, to please come on the dais. Rujal, please come on the dais and welcome the chief guest of today's function, Dr. Raj Gajbhia sir, Dean GMRC. Thank you, Rujal. May I request Shalaka to please come on the dais and welcome the guest of honor of today's inaugural function, Dr. Atul Vaidya sir, the director, CSIR Niri Nagpur. Thank you, Shalaka. Thanks a lot. May I request Rudransh Gautam from Rajendra High School to please come on the dais, and you have to welcome Shri A.D. Chaudhary sir, Director General of National Council of Science Museum, and Raman Science Center is a part of this council. Thank you, Rudransh. I request Shreya to please come on the dais. She is a student of Rajendra High School, Mahal, Nagpur, of class 10th, and she'll welcome Shri Samarendra Kumar sir, Deputy Director General, National Council of Science Museums. Thanks to all the students. Thank you so much. We now request all the dignitaries on the dais to light the traditional lamp and start this exhibition on the auspicious note. This exhibition, it will open for the public from today till December 2023 on all days except one, that is 12th of November, and it is a Diwali day. Thank you all the dignitaries. May I now request the Director General of National Council of Science Museums, Shri A.D. Chaudhary sir, to give welcome address. Namaskar. Coming back to this Science Center after 27 years, I was working here from 93 to 96, so it's like homecoming for me. Chief guest of today's inaugural program, Dr. Raj Gajbhia ji, Dean of the Government Medical
College and Hospital, Nagpur, Dr. Atul Vaidyaji, Director CSR DD, Nagpur, my colleague Sri Samanendra Kumar, Deputy Director General NCSM, distinguished guests here in this audience, my young friends, students from different schools here, members from the print and electronic media, and my colleagues from Raman Science Center, Nagpur. It's extremely very heartening and welcoming initiative by my colleagues here in Raman Science Center, Nagpur, to set up this exhibition. Just now, we had the privilege of taking our distinguished guests to see the exhibition, to have a first-hand feel of what has been created here. This exhibition, Vaccines Injecting Hope, is a joint initiative between the National Council of Science Museums and Science Museum Group London, and funded by the Wellcome Trust, and definitely supported by a lot of scientific institutions here in India, to name a few: ICMR, NIV Pune, CSIR, All India Institute of Medical Sciences, Serum Institute, Bharat Biotech. So they all have joined hands with us in developing this exhibition. This exhibition was initially opened at New Delhi on the 15th of November by our Honorable Minister Sri Arjun Ram Meghwalji, and this exhibition was received very well by the people of Delhi from the time it was inaugurated on 15th of November, and it was there till 15th of June. We had more than 6.85 lakh people who visited this exhibition, and I'm sure with the popularity of Raman Science Center here in Nagpur, and with the mouth-to-mouth publicity that we expect from all the people who are here, we expect a large number of people to come and see this exhibition. Especially, this is very important, I would say, for the young students to understand, how the entire story of vaccine manufacturing happens, what are the effort which goes into it, the hard work done by our scientists, our medical professionals uh, in developing this vaccine and taking it to the citizens across the country. Just around 2.5 years back, when we had the COVID pandemic, we were all restricted to our home. Many of us have lost our close friends and relatives. It was a very difficult situation for every Indian, and not only Indian, I would say every citizen of this world. And with the development of vaccines, we have seen the changes, we have seen how we could overcome that. And I think a lot of credit goes to the people who are involved in this entire process. And I think this is also an opportunity for us to convey our heartfelt thanks and gratitude to all the people who helped us in the development of vaccines, in its circulation and its implementation throughout the country. And as an Indian, I think all of us should be very proud that we could, with our own efforts, develop vaccines which were very successfully implemented throughout the country. And we, not only in our country, we also helped a lot of other countries to treat their citizens. What we expect is, as this exhibition opens today, we have also launched a mobile van with this exhibition, and during its period of exhibition here in Nagpur, this mobile van will travel to the entire Vidarbha zone
so that this message can be shared with also the people who are unable to come and see this exhibition. I once again request all of you, especially members from the print and electronic media, please take this message to the people so that the efforts which have been given for developing this exhibition, the amount of support that we have received from various organizations in developing this exhibition, the purpose for which it has been developed, we can fulfill our objective, we can fulfill our goals to reach out to people from for all sections of the society. I think the print and electronic media have a major role to play. My earnest request to all of you, please take this message forward so that people get benefited out of this exhibition. For my young school friends, youngsters, I think this is an exhibition you should very closely go through, try to understand the entire process. I'm sure it will interest some of you, and maybe in future you all will be leading in the development of future vaccines that will be required for the survival of mankind. So it is for you youngsters to take this forward. What the senior scientists have done for the COVID, I think the responsibility will be in future on all of you to do good work on science and to help every citizen of this world to live healthily and happily. So see this exhibition. If you have any doubts, talk to our colleagues here. There will be some people to guide you. Try to understand. If you need any further help, please reach out to my colleagues here in Raman Science Center. I'm sure everybody will help you out. With these few words, I once again welcome all of you here today for the inaugural function of launching this exhibition, Vaccines Injecting Hope. And I am hopeful what we have seen in Delhi, where we got more than 6.85 lakh people to see the exhibition, we'll get a similar figure also here in Nagpur. Thank you. Jai Hind. Namaskar. Thank you, sir, for articulating the motive behind the exhibition. And we, the staff of Raman Science Center, we want to assure you, sir, that we try our level best to bring more and more people to the exhibition. And till December 2023, there are lots of programs planned for the students and for general visitors and teachers as well. So thanks a lot, sir. Thank you very much. Let us move further. We are all fortunate to have Dr. Atul Vaidya, sir, Director NIRI, and sir is also chairman of local advisory committee of Raman Science Center, and today he is present here as a guest of honor. And it is my privilege to introduce sir to you all. Dr. Atul Vaidya did BTech in chemical engineering from Lakshmi Narayan Institute of Technology, LIT Nagpur, and his MTech in chemical engineering from IIT Mumbai. He obtained PhD in chemical engineering from Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University. At present, Dr. Vaidya is director of CSIR, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur. We popularly call it as NIRI. He has over 34 years of research experience in environmental science and engineering, especially in the field of waste management. Dr. Vaidya has extensively worked on various aspects of waste management, including characterization, treatment, reuse, and recycle, etc. He has published many research papers in national and international journals. And on this occasion, I request sir to guide us, please. Thank you for nice introduction. Dignitaries on the dais,
and my dear students. A very good morning to all. So that means you are in active phase. So because you have to go through the exhibition. You have to be active if you want to combat virus. If you are not active, virus will kill you. As simple as that. Anyway, it's a very good exhibition today. I am privileged to privileged to be here for the inauguration of this exhibition and flagging of the mobile exhibition to different places. That will ensure that those who can come to Nagpur, always they will be benefited by looking at this exhibition at Raman Science Center. But not only if you are not in a position to come to Nagpur, exhibition will come to your doorstep in your village or in your township or in your district place, so that you get a chance, and mostly students have to visit such kind of exhibition. Now, all of you are aware of COVID because probably you have seen it in very early age. We have seen it in very later age. We never imagined that this kind of virus will attack whole world and there will be a pandemic like situation. We never imagined that because we always thought that everything has been done through science and technology, and then no more such viruses, no more such local issues are always there. But this is the kind of learning for all of us, especially those who are in the research field. And therefore, this is a very nice history of COVID. It's practically 3 years. It started in practically 19 end, and then practically we got rid of this virus, or at least we are now in terms with this virus in 22 end. So it's almost 3 years story. You go through the exhibition, and I will request all students to really get into the exhibition. Certain part may not be you can say palatable at this age, at this knowledge level which you have, but try to get it explained from the volunteers which are around. You have to know the virus, you have to know the symptoms. There are steps for this. All victory on the virus is know the virus, then tame the virus. You should not be afraid of virus. Otherwise, you cannot combat virus. So tame the virus. Try to know how it can be deactivated, how immunity can be developed. Next part is totally research, that you have to develop a vaccine. So vaccine is to be developed in a proper way, with proper trials, with proper, so that it is not harmful to the human being, which is actually likely to get it. Then story doesn't stop there. You should really go through all these vaccinations. So you have to produce this vaccine in bulk level. It is for crores of people, not for 1 or 2 persons. So that small thing which you do in laboratory has to be actually translated into the industry, and huge tonnage of virus, this vaccine has to be produced. Most interesting part is that even if it is produced in the industry, it has to be taken to the local people in proper condition. You cannot carry a vial of that vaccine in your pocket and take it to the people. It is not like that. It has to be stored properly. It has to be, its potency is to be mentioned, and then it has to be given to the lowest possible strata of the society in a right condition. So this whole chain, right from research to actually delivery to the common man, is a beautiful story depicted here. And all of you look as a student into this story. You may be interested in one part, take that part, no issues. If you are interested in research, if you are interested in industry, if you are interested in supply chain, if you are interested in social work, delivering the actual vaccine to the people, that also needs a lot of courage. And you will find that everybody has contributed, and it's a total story of how mankind, not countries, mankind has totally devoted to one cause, to develop vaccine and make people immune to the pandemic, this virus, coronavirus, and pandemic should be get over. That is the whole story. It's a beautifully depicted through all examples. Number 2, they are all genuine and authentic stories. Otherwise, you will keep on getting a lot of WhatsApp stories. Everybody is aware. So you call it WhatsApp University, or you call it WhatsApp stories. Many of them are not true. But here you will find the genuine, authentic people, authentic publications, authentic stories, which are beautifully depicted. And I think it's a very good opportunity you should encash on. Even the younger and older people also should know how it has been done. And I would request press and media to give a good footage to this,
from technical and scientific point of view. That is very important. So take the advantage of this very nice initiative which has been taken, and it has got a very good response in Delhi, as said by sir, in lakhs. Probably Nagpur will make a record, sir. I am sure. Nagpur will cross 10 lakh mark, then 1 million, nothing. And Vidarbha taken together will be much more than that. I am very sure about that. Because we have that kind of people here who are interested in science and technology. Recently, one ISRO exhibition, mobile exhibition is also on in many places. And the kind of response you are getting for ISRO mobile van is similar. It's a stupendous response. So, I am sure for this also, and there is a drastic difference. ISRO is something which is in mega scale, in galaxies and into moon and all that. And here you are talking of very minuscule, very thing which you cannot see. And these are two success stories always. For India, it is for, maybe it is for Chandrayaan, maybe it is for vaccine. So take a pride into that. We have, and I will tell you from my experience and what a little knowledge I have, that India was the most successful country to combat COVID as compared to any other developed country in the world. And this has been accepted, and that too, we could give vaccine free of cost. Rest of the world is taking charge for that. India, 125 crore of people got vaccine free of cost. That is stupendous. That is unparalleled. And therefore, I say that we are the people who can combat anything if we are together. So, take this message. You are young. Some of you may be virologists. Some of you may be biotechnologists. Some of you may be into very good fields like this. Pick up whatever is your interest and get into this. Finally, I would like to say that I had been recently, not to tell that I was in USA, I had a chance to go to USA. I saw two very good science exhibitions, one in Chicago, one in Cleveland. And I will tell you, because that is the so-called USA, you can say, the most developed and a lot of money they put in. This exhibition is no less than those exhibitions. I take it, and you can clap for that. I congratulate Raman Science Center and all the team that this exhibition is no less than that. All practical things, everything is there. Take advantage of this. Finally, when I went to Cleveland, that is for astronomers, and they say Cleveland is the place where astronomers are born. So all you students take this challenge that you say Nagpur is the place where virologists are born and they can develop very good vaccines. So with this exhibition, that is the starting point. Thank you very much. All the best. Enjoy. Thank you very much, sir. It's an honor to have you for the program. You expressed hope, sir, that the Science Center is going to break records. And again, this statement is a bit putting pressure on us, but we'll try our level best, sir. We'll reach out to the students and we'll try to bring in more and more students for the program. Thank you so much, sir. Now we have a recorded message for you all from our colleague from Science Museum Group, London. And she's Miss Helen Jones, Director Global Partnerships. I request my colleague Mani to please start the same. Let us listen to her. Hello everyone, I'm Helen Jones. I'm Director of Global Engagement for the Science Museum Group, the UK's National Museum of Science and Industry. I'm speaking to you today from our medicine galleries here at the Science Museum in London, and we also have on display our own version for the UK of the Injecting Hope exhibition. You'd recognise quite a lot of the elements from India, because this project was a true collaboration, co-created from the start with partners in India, China and the UK. And of course India is a vital part of that story, with the Serum Institute of India rising to the enormous challenge of developing and producing at pace and at scale vaccines for the world. That features strongly in our version of the show. It's been a privilege and a pleasure to work once again with the National Council of Science Museums. Thanks to everyone there for all that we've learned from you and all the fun that we've had in creating this fascinating and valuable exhibition. Many congratulations on the opening at the Raman Science Centre in Nagpur. I wish I could be there, but we do hope to be in India again soon. In the meantime, enjoy the launch event
and enjoy the show. Bye. Thank you very much, Ms. Jones, for your wishes. I'm sure that the NCSM and SMG partnership will go a long way. Uh, Let us move ahead. We have Dr. Raj Gajbhir, sir, Dean, Government Medical College and Hospital, Nagpur, as a chief guest for today's inaugural function. Uh, Dear audience, let me introduce sir to you all. Dr. Raj Gajbhir, sir, is a consultant bariatric, advanced laparoscopic and robotic surgeon. Various fellowships are awarded to sir in advanced laparoscopic surgery, bariatric surgery, and thoracoscopic surgeries. Various publications in national and international journals to his credit. Received Best International Paper Award in World Laparoscopic Conference at SAGES, USA for 3 consecutive years. And he established state-of-the-art advanced laparoscopic surgery department at Government Medical College and Hospital, Nagpur. He took initiative in Government College, Nagpur in fabricating one new robotic surgery facility, and which will be coming soon in the hospital. I request you, sir, to enlighten us on the occasion. Thank you, sir, for a very kind introduction. The respected dignitaries on the dais, Dr. Atul Vaidya, who is Director of the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur. We have with us Shri A.D. Chaudhary, who is Director General of the National Council of Science Museums. We have Shri Samarendra Kumarji, Deputy Director General, National Council of Science Museum. Dignitaries of the dais, all the staff of Raman Science Center, the students of various schools who have come to attend this function. At the outset, let me thank you all and the organizers for inviting me here for such a wonderful function for inauguration of the science exhibition, and especially the theme of the science exhibition remains to be hope, injecting the vaccine. So the theme itself is so good, and I have seen the exhibition which was displayed here, which is displayed here, and it's an excellent predisposition of vaccine, how the vaccine generated, what was the need of vaccination, how the vaccine was evoluted, and then we had recently the COVID pandemic, and how the COVID vaccination was come into the work, and the details about the COVID vaccination. We have also seen the inauguration and flagging off ceremony of the van, which will go to many of the, I mean, almost all the districts of Vidarbha, and or the various taluka places in Nagpur, and the society and the students will get knowledge from visiting this particular van. I am going to communicate with you with in either Hindi or Marathi also, because there are various students from the school. Just as far as the vaccines are concerned, the importance of vaccine, ये वैक्सीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये वैक्सीन है क्या,
ये कहाँ से आए, कैसे जनरेट हुए। तो वेरियस इन्फेक्शंस जो है वो इन्फेक्शंस को कॉम्बैट करने के लिए, वो इन्फेक्शंस से फाइट करने के लिए ये वैक्सीन्स जनरेट किए गए हैं। ये वैक्सीन्स कुछ आज के जनरेटेड वैक्सीन्स है क्या, तो एक काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ऑलमोस्ट अबाउट 400 BC तब एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जैसा अभी आप लोगों ने विटनेस किया है इस महामारी को, कोरोना वायरस के महामारी को। वैसे ही एक 400 BC में और बहुत पहले के ज़माने में एक प्लेग नाम की बीमारी आई थी। तो इस प्लेग नाम की बीमारी में अबाउट 40 करोड़ 40 करोड़ लोग इस बीमारी के चपेट में आए थे और 40 करोड़ लोग ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, ये लोगों की डेथ हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेग। इट वाज मच मोर पैंडेमिक देन कोरोना। तो हुआ यूं कि लोग मरते थे और जो मरने वाले लोग हैं उनकी कुछ सेवा में कुछ लोग लगे हुए थे उनको बचाने में। कुछ लोगों को प्लेग हुआ, उसमें से वो रिकवर हुए और ये देखा गया कि जो रिकवर हुए लोग हैं उनकी उस पर्टिकुलर वो लोगों ने प्लेग के पेशेंट्स की सेवा की। तो देखा ये गया कि वो पेशेंट्स को कुछ नहीं हुआ जिनको ऑलरेडी प्लेग हो चुका था, और जो प्लेग में से बच गए थे ये लोगों ने जब वो पेशेंट्स की सेवा की प्लेग के, तो ये जो पेशेंट्स थे जिनको ऑलरेडी प्लेग हो चुका था उनको वो प्लेग में उनकी मौतें नहीं हुई। ये एक ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद में आया स्मॉल पॉक्स यानी हम देवी जिसे कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स आया इन 18th सेंचुरी। स्मॉल पॉक्स में पूरे देयर वेर यूज टू बी सर्टन पिगमेंट्स ओवर द बॉडी और पूरी बॉडी डिसफिगर हो जाती थी। ये स्मॉल पॉक्स भी एक ऐसा ड्रेडफुल डिसीज था जिसमें से काफ़ी मौतें हुई थी, और जिसको ये स्मॉल पॉक्स होता था तो उसकी बचने की उम्मीद काफ़ी कम रहती थी। तब लोगों ने वो स्मॉल पॉक्स में से जो बच जाते थे उनके शरीर पे कुछ स्केल्स, वो ड्राई हो जाते थे सेल्स, और वो उनकी जो स्किन है वो स्किन में से वो ड्राई चिप्स ऐसे चिप्स मीन्स उसके जो फॉलिकल्स रहते थे वो ड्राई होके निकल जाते थे। तो इन्होंने एक ये किया कि ये जो स्किन के ऊपर के जो स्केल्स उनके निकल रहे हैं उसका पाउडर किया, और वो पाउडर जो पेशेंट्स में ये स्मॉल पॉक्स होने के पहले लोगों में उसमें इम्प्लांट किया। इम्प्लांट इसके लिए किया कि उनके नाक के थ्रू इम्प्लांट किया, यानी नेजल म्यूकोजा से इम्प्लांट किया, या फिर कहीं वो जख्म कर देते थे और उसमें ये पाउडर डाल देते। तो इससे ये देखा गया कि ये पाउडर का इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में, इम्प्लांट करने के बाद में, वो जो पेशेंट्स में ये पाउडर जाता था वो पेशेंट्स को स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो दिस ग्रेजुअली इट केम आउट टू बी द इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी, यानी ये अगर इन्फेक्शन कम रेट में वो बॉडी में अगर जाता था तो वो पर्टिकुलर पेशेंट में एंटीबॉडीज तैयार होती थी, यानी हमारी अंदर में एक फाइटिंग क्षमता है विच इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी, और वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी तैयार होती थी और हमारी क्षमता ये बढ़ती थी उससे फाइट करने की। ये सब कंप्लीट ये इसमें दिया हुआ है। सिमिलरली एक कुत्ता काटने का इंजेक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी रेबीज वैक्सीन। ये सब वैक्सीन है। देन देर आर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन, BCG वैक्सीन, ये सब हमने हमारे जब आप लोग छोटे थे, पोलियो वैक्सीन, ये सब इसके टीके हमने ले चुके हैं, है ना। और करके ये पर्टिकुलर डिसीजेस काफ़ी सारे इरेडिकेट हो चुके हैं। से फॉर एग्जाम्पल द प्लेग इज इरेडिकेटेड, द स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड, द पोलियो इज ऑल्सो इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया।
इन द सेंस कि अभी भी टोटल इरेडिकेशन होने का है, लेकिन 2 बूंद जिंदगी की, ये अगर आपने अमिताभ बच्चन का कभी ये सुना होगा फॉर पोलियो वैक्सीनेशन, तो ये धीरे धीरे ये सब डिसीजेस हमारे इसमें से सोसाइटी में से निकलते जा रहे हैं। सो ये सब नए नए इन्वेंशंस हैं। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का लुइस पास्चर in 1800 he has invented this particular anti-rabies vaccination, और उनके तरफ he has invented cholera vaccine and he has also invented anti-rabies vaccine। लेकिन वो जो रेबीड डॉग्स रहते थे, जो डॉग्स को रेबीज होता था, उनमें से उन्होंने कुछ सीरम निकाला था, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये पेशेंट्स को दे कैसे, वो उसको इनएक्टिवेट करके, यानी जो वायरस है वो वायरस को वो कुत्ते में से निकालना उसके ब्लड में से, और उसको इनएक्टिवेट करना, उसको डेड करना वो वायरस को। और ये जो डेड वायरस है ये मनुष्य के इसमें इंजेक्ट करना, तो उसके अगेंस्ट में, वो डेड वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार होती है उनके शरीर में। तो ये वो ज़माने में इन्होंने ये किया। तो एक बच्चा, 9 साल का बच्चा जिसका नाम था जोसेफ ईस्टर, एंड दिस चाइल्ड वाज ब्रॉट टू लुइस पास्चर, और इसको बार बार एक रेबिड कुत्ता काटता था। और तब के ज़माने में रेबीज जिसको होता था वो पेशेंट्स बचते नहीं थे। इनके पास में ये इन्वेंशन इन्होंने करके रखा था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कॉलरा का वैक्सीन इन्वेंट किया था। तो इन्होंने पहले बार वो जोसेफ के शरीर में ये रेबीज का वैक्सीन डाला, और वो भी इसके लिए डाला कि वैसे भी वो बचने वाला नहीं था, और अगर वो बचने वाला नहीं है, और ये अभी तक ह्यूमन बीइंग्स पे इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था करके, अगर वो वैसे भी बचने वाला नहीं है, तो शायद ये इंजेक्शन देने के बाद में भी अगर वो नहीं बचेगा तो भी मैं ट्राई करता हूँ करके उन्होंने कंसेंट लिया। ये इंजेक्शन, या एंटी रेबीज का इंजेक्शन उन्होंने वो जोसेफ के शरीर में डाला, एंड फॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर a vaccine was inoculated in a human being. So this is the history, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आप ये एग्जीबिशन में अभी जब जाएंगे, ये सब देखेंगे, तब आपको ये सब पता चलेगा। वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाला, वी शुड बी प्राउड इंडियंस कि हम इंडिया में, हमारी जो कंट्री है वो वैक्सीन्स बनाने में सबसे बड़ा हाथ है हमारे कंट्री का। जो हमने 60% of the vaccines are being exported to the whole world by India. So we are one of the biggest manufacturers of vaccine. अभी कोविड-19 में हमने देखा है कि इतना बड़ा पेंडेमिक आया, और ये वैक्सीन्स जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध थी, बाकी पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन के बारे में सब चल रहा था कि वैक्सीन कोविड का कब आएगा। 11 महीने के अंतराल में हमने इतना फास्ट, वैसे वैक्सीन इतने फास्ट आते नहीं हैं, दे टेक ईयर्स टुगेदर टू हैव इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन्स, बिकॉज इट इज़ टू बी फर्स्ट इंजेक्टेड इन एनिमल्स। वो एनिमल्स के ऊपर वो टेस्ट होते हैं, उसके बाद में फिर वॉलंटियर्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्ट होते हैं, और फिर ये सब इसकी जब सेफ्टी होती है, और हमको वी आर वेरी श्योर कि अभी नाउ दिस वैक्सीन्स कैन बी नाउ गिवन इन पेशेंट्स, तब कहाँ वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डीजीसी है, ऐसे अनेक एजेंसीज है, उसके अप्रूवल के बाद में फिर वो ह्यूमन बीइंग्स में यूज़ होती है। इतना टाइम लगता है वो 5 से 6 साल वैक्सीन को निकलने में, कोई भी नए वैक्सीन को निकलने में। लेकिन यहाँ ये ऐसी महामारी आई थी कोविड-19 कि इसमें ये वैक्सीन लाना बहुत ही ज़रूरी था, और ये हमने हमारे इंडिया में 11 महीने में ये काम करके बताया, एंड वी वेयर द ह्यूज मैन्युफैक्चरर्स, एंड वी वेयर द, और इंडिया के समान पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो 140 करोड़, 100 कोटि जनता को, 100 कोटि लोगों को हमने ये वैक्सीन दिया, एंड इंडिया इज़ द कंट्री वेयर
about 80 to 90% of the vaccinations with second dose has been done, and this is an example to the world. So we should be proud that we are manufacturing our vaccines in there are Bharat Sira Limited, and there are पुणेमध्ये ती वॅक्सिन मॅन्युफॅक्चरिंगची इन्स्टिट्यूट आहे, Serum Institute, and so on and so forth. So we have all the facilities, and we are moving on. There are some myths against the vaccines कि ये जैसे वैक्सीन तो लेना है ही, लेकिन कुछ ऐसी अंधश्रद्धाएं वैक्सीन के बारे में भी कुछ प्रचलित है इन दी सोसाइटी कि वैक्सीन लेने से हम वो बीमारी दूर नहीं होती है, वैक्सीन लेने से ऑटिज़म होता है, वैक्सीन लेने से बच्चों में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो आप सब लोग इस एग्जीबिशन में आए हों, आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने यहाँ से अच्छा नॉलेज ले करके हाउ वैक्सीन्स आर सेफ एंड हाउ वैक्सीन्स आर वेरी यूजफुल टू द सोसाइटी टू कॉम्बैट इन्फेक्शंस, ये वर्ड आपने स्प्रेड करना है आपके फ्रेंड्स में, एंड उनका भी ज्ञान में वृद्धि करना है एंड अवेयरनेस करना है। देयर इज़ फ्यूचर ऑफ वैक्सीन्स, बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन्स नए इसमें आ रहे हैं। अभी जो इंजेक्शन्स है वैक्सीन के, वो उसके जगह एडिबल वैक्सीन्स आ रहे हैं, शायद कुछ जैसे पोलियो के ड्रॉप्स हैं, या फिर आप कुछ वैक्सीन्स मुंह से ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम टैबलेट्स। सिमिलरली कुछ हाइब्रिड वैक्सीन्स निकल रहे हैं। एक वैक्सीन अगर हमने प्रोड्यूस किए तो उसमें 2 से 3 डिसीजेज भी वो कवर करते हैं, ऐसे हाइब्रिड वैक्सीन्स भी निकल रहे हैं। कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स निकल रहे हैं, जैसा लीवर काफ़ी हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें लीवर का इन्फेक्शन होता है, और ये लीवर के इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को सिरोसिस होता है एंड देन लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए वैक्सीन्स आए हुए हैं, हेपेटाइटिस सी एंड बी एंड सी वैक्सीन्स, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं। ये वैक्सीन्स नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, द फ्यूचर ऑफ द वैक्सीन्स इज प्रोबेबली दे आर ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की कुछ फ्रूट्स या कुछ खेत में उनको यूज़ कर सकते हैं, और कुछ अच्छी उनसे सब्जियों की पैदाइश या कुछ अलग अलग फ्रूट्स की पैदाइश हो सकती है। सिमिलरली वो फ्रूट्स पे कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए भी कुछ वैक्सीन्स निकले हुए हैं। सो ये एग्जीबिशन में ये इतना अच्छा एग्जीबिशन अरेंज करने के लिए मैं फिर से एक बार ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, and I thank once again for inviting me here to share my views with you. Thank you so much. धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। आप जब बात कर रहे थे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ध्यान से आपको सुन रहे थे, और मैं आपको बताऊं सर कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपनी अपनी स्कूलों के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द dignitaries to please unveil the information brochure of this Vaccines Injecting Hope exhibition. Thank you all the dignitaries. Thank you. Before we proceed for vote of thanks, we'll felicitate our respected guests by presenting a memento and a shot. I request DG sir to felicitate the chief guest of today's function, Dr. Raj Gajbhe sir.
Thank you, DG sir, for doing the honor. May I request now DDG sir to felicitate the guest of honor today's function, Dr. Atul Vaidya sir. Hello. I request the project coordinator of Raman Science Center, Nagpur, Shri Arnav Chatterjee sir, to felicitate Shri Chaudhary sir. No, sir, no. This is actually our pleasure that you are here. Thank you. Thank you, Arnav sir. Almost 30 years before, from 1993 to 1996, Chaudhary sir was the project coordinator of Raman Science Center, long ago. So, thank you very much, Arnav sir. Thanks a lot. I request Shri Manoj Kumar Panda sir to please come on the dais, the curator of Raman Science Center, to felicitate Shri Samarendra Kumar sir. Please, sir, please. The Deputy Director General, National Council of Science Museums. This is to all the audience. I want to draw your kind attention to the fact that sir is the curator of this exhibition. He is the head and coordinator of this Vaccines Injecting Hope. Thank you so much. Thanks, Panda sir. Thank you. Now, may I request Shri Samarendra Kumar sir to please propose vote of thanks. Good afternoon and namaskar. माननीय डॉक्टर राज गजबीर जी, डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल वैद्य जी, डायरेक्टर्स नीरी एंड चेयरमैन ऑफ लोकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ रमन साइंस सेंटर नागपुर, और आज के विशिष्ट अतिथि श्री एडी चौधरी जी, डीजी NCSM, my colleague Mr. Arnav Chatterjee, head of this Raman Science Center, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, यंग साइंटिस्ट जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो रिसर्चर्स हैं, होने वाले रिसर्चर्स, साथ में यहाँ पे जो और भी विशिष्ट अतिथिगण मौजूद हैं यहाँ पे इस सभागार में, प्यारे बच्चों, और जो मीडिया के फ्रेंड आए हुए हैं उनके लिए मैं एक बार आई एम रियली प्रिविलेज टू गिव ए प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स फॉर दिस फंक्शन. मैं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की तरफ से और रमन साइंस सेंटर की तरफ से सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम में की शोभा बढ़ाई, और ख़ास करके डॉक्टर गजबीर जी का इन्होंने सेकंड लेग जो हमने उद्घाटन किया यहाँ पे, और ख़ास करके बहुत चीज़ों के बारे में बताया, आई थिंक हम लोग के लिए इंस्पायरिंग है, खास करके यंग बच्चों के लिए कि कैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है और किस तरह के वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं. सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड इंस्पायरिंग अस. स्पेशली एक जो अभी जो रिसेंट है, जो भारत कोशिश कर रहा है टीबी को इरेडिकेट करने के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी 2025 तक जो उसके लिए वैक्सीन का जो निर्माण हुआ है, और उसके बाद उसका जो है, आई थिंक हम सभी लोग जानते हैं किस तरह से वैक्सीन का ये होता है, और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज इसके बारे में है. मैं डॉक्टर अतुल वैद्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमें इसके बारे में बताया, और ख़ास करके जब वो एडवाइजरी कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं रमन साइंस सेंटर का, तो उनका गाइडेंस और सपोर्ट हमेशा ज़रूरत पड़ता है और हमेशा देते रहते हैं. सर, मैं चाहूँगा कि इस तरह का जो आप माउथ थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे तो ये एग्जीबिशन की और शोभा बढ़ेगी और लोग आएंगे यहाँ पे देखने के लिए. मैं अपने डीजी श्री एडी चौधरी जी का हमेशा धन्यवाद दूंगा, और खासकर हमारे साथ में हैं वहाँ पे, तो और क्योंकि हम इस तरह का इंटरनेशनल एग्जीबिशन करते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं, उसके लिए हमें हमेशा गाइडेंस सपोर्ट और हम कैसे एग्जीबिशन में और कुछ लाएँ ताकि लोगों को ये पसंद आए, उसके लिए हम उन्हें हमेशा गाइडेंस मिलते रहता है. तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. ये एग्जीबिशन न केवल NCSM बट ये बहुत से ग्लोबल पार्टनर के साथ में भी किया गया है. खास करके आपने ब्रिटिश काउंसिल का नाम सुना होगा. यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट देखा होगा कि आर्ट इंस्टॉलेशन वो वहाँ पे है, वो ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा सपोर्टेड है, जहाँ पे दो कलाकार थे, दो एग्जीबिशन आर्टिस्ट थे. वहाँ पे सुशांत कुमार जी इंडिया से और मिस्टर निजल टाउनसेट थे, वो UK से. दोनों मिल के इसको बनाया, और उसको बनाने के लिए उन्होंने जो महाराजा और मैसूर हैं
उनके साथ मिलके बहुत बात की। और वहाँ पे आपने एक पिक्चर देखा होगा जहाँ पे चेचक का जो दाग लगाया जाता है, जो टीका लगाया जाता है, उसके बारे में एक है जो बहुत ही पुरानी हमारी हिस्ट्री है, तो उसके बारे में बताया। तो मैं ब्रिटिश काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस स्कल्पचर को ये किया। हेलन जेम्स जो हमारे बीच में थी, वो लास्ट टाइम दिल्ली में आई थी और चूँकि इस बार नहीं आ पाई, शायद इसके जो नेक्स्ट लेग ऑफ एग्जीबिशन है मुंबई में, वहाँ पे उपस्थित हों। और हमें हमारा जो कोलैबोरेशन है साइंस म्यूजियम ग्रुप लंदन के साथ में, साइंस म्यूजियम ग्रुप वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे विज्ञान को किस तरह से संजोया जाता है, किस तरह प्रोपेगेट की जाती है। और जो कभी विश्व में बात होती है तो 3-4 जो टॉप इंस्टीट्यूशन उसके बारे में, और NCSM भी उसके साथ कोलैबोरेट करता है, एंड दे आर विल फील वेरी प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ NCSM, टू कोलैबोरेट विद NCSM। और हमारे बहुत से प्लान हैं जो आने वाले वर्षों में हम उनके साथ काम करने वाले हैं, कुछ और एग्जीबिशंस आने वाली हैं। इसके पहले हमने सुपर बक्स पे किया था, और चूंकि नागपुर इसलिए हुआ सर क्योंकि इस बार हम लोगों ने, उन्होंने 5 जगह चुनी, तो हम लोगों ने सोचा कि जब दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं तो बीच में क्यों नहीं नागपुर भी किया जाए। और चूंकि ये एग्जीबिशन बहुत बड़ा है, अब लगभग 600 स्क्वायर मीटर का एग्जीबिशन है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन इससे इतनी बड़ी होती नहीं, इससे छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन बहुत है, तो हमें बहुत स्पेस चाहिए था, और नागपुर एक हमारा बहुत अच्छा वेन्यू था और काफ़ी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी टीम को। उनके बहुत से क्यूरेटर, साइंटिस्ट लोगों ने काम किया है जो एक्चुअली वैक्सीन के बारे में काम कर रहे थे। मैं वेलकम ट्रस्ट इस पूरी एग्जीबिशन को जिन्होंने फंड किया है, सपोर्ट किया है, मैं उनको धन्यवाद चाहूँगा। उनका बहुत से उनके एक साइंटिस्ट उनके आने वाले थे यहाँ पे, बट लास्ट मिनट में उनका एक प्रोग्राम कैंसिल हुआ सर, वो बट ऑलमोस्ट लास्ट वीक तक उनका कंफर्म था, बट सम रीज़न, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसको बनाने में एक्चुअली बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया है, जो जहाँ पे मैं पर्सनली बहुत जगह इंस्टीट्यूट गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एम्स और बहुत जगह पे, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा मुझे बताया गया है कि एक जो साइंटिस्ट है डॉक्टर प्रज्ञा यादव यहाँ आ रही हैं, और स्पेशली खास करके बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, कैसे महिलाओं ने इंडिया की जो इंडिजिनस वैक्सीन है बनाने में, कितनी महिलाओं ने भाग लिया और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो उनकी जो स्टोरी है वो इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग। अगर आप उनके बारे में सुनेंगे जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं भी एक वायरोलॉजिस्ट बनूँ, मैं भी एक साइंटिस्ट बनूँ उसके बारे में। और अभी वो UK होके आई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने साइंस म्यूजियम ग्रुप में भी बुलाया था वहाँ पे, तो उनको बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो मैं चाहूँगा कि आप उस तरह से करके न केवल ICMR, NIV और बहुत से जो इंस्टीट्यूशन हमारे CSIR, एम्स और ये आधार पूनावाला CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जो बाहर में आपने देखा होगा एक प्रोटोटाइप बना के किस तरह से लोग BSL-4 लैब में काम करते हैं, हमीद शाहनी जी, वो सब उन्होंने इसको एग्जीबिशन को सपोर्ट किया, डोनेट किया। यहाँ बहुत से ऐसे आइटम्स हैं, जब ये वैक्सीन बन रही थी तो एक जब उसकी टेस्टिंग होती है तो BSL-4 लैब में पहन के एक सूट पहन के जाते हैं लोग, और वो बहुत ही डेडली वायरस के लिए काम किया जाता है। BSL-4 लैब होता है, उसमें जो सूट पहना था डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने, वो सूट यहाँ पे है, आप जरूर उसको देखेंगे। और वो चूँकि उसके बाद फिर उसको डिस्टलाइज किया जाता है ताकि लोग उसको इन्फेक्शन नहीं हो वहाँ पे, तो वो यहाँ पे रखाया गया है। तो आपको एक लगेगा कि कैसे लोग पहनते थे, और वो उनकी हाइट बहुत कम है। उन्होंने किस तरह से 17 घंटे दिन भर में, 17 घंटे दिन भर में, जहाँ पे आप उस एक बार जब जाते हैं उस लैब में, आप बाहर नहीं आ सकते हैं जब तक कि आप पूरा टास्क आप पूरा नहीं कर लें। और उस सूट को पहन के नॉर्मली कोई भी अच्छा ह्यूमन, मतलब हेल्दी ह्यूमन बीइंग 3 से 4 घंटे रहता है, बट उसमें कुछ महिलाएं थी जिन्होंने 17 घंटे काम किए। तो इस तरह के एक छोटी सी वैक्सीन बनाने के लिए, तो उनकी जो स्टोरी है वो आप सभी लोगों के लिए, आप जब उनसे सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे इस एग्जीबिशन में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ने काम किया, और इसमें जो कोरोना वॉरियर्स थे हमारे, जिन्होंने कोरोना का जो वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हो रहा था पीरियड में था, वॉलंटियर्स थे, उनसे हमने डायरेक्टली बात की, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। एक स्टोरी बहुत ही अच्छी इसमें, जिसमें एक मनीष कुमार जी जो पहला जिन्होंने वैक्सीन लिया पूरे इंडिया में, जो उन्होंने बिकॉज वो अपने जो सीरियल था, जो जब वो ट्रायल वॉलंटियर की बात होती थी, उनका सीरियल नंबर 19 था, लेकिन 18 लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया कि मुझे क्या होगा वैक्सीन लेने से। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं लूँगा, बिकॉज ये कॉज के लिए है, इसलिए मैं लूँगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं देखता हूँ कि अगर मिलने से क्या होता है। सो एंड ही बिकेम द हिस्ट्री। आज के बाद 100 साल के बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएगी कोरोना में इंडिया में किसने वैक्सीन लिया था, तो मनीष कुमार जी का नाम आएगा। सो आई थिंक ये स्टोरीज़ है जहाँ पे कि कैसे किन्होंने वॉलंटियर ने काम लिया। और आपको बताना चाहूँगा कि मुझे जैसे पता चला है कि जब वैक्सीन की ट्रायल हो रही थी तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इसमें विदिन एक दिन के अंदर में लोगों ने, हज़ारों लोगों ने
जब वो वॉलंटियर्स की बात हो रही थी, लोगों ने अपना वॉलंटरी किया कि मैं वैक्सीन को ट्रायल में जाना चाहता हूँ। तो पहली बार हुआ ऐसा कि जिसमें कोविड वैक्सीन के ट्रायल के लिए हज़ारों लोगों ने इसमें दिया, उसमें सेलेक्ट करते हैं फिर काफ़ी लोग, तो लिमिटेड लोगों को लिया गया। तो इसमें करने के लिए उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने भाग लिया, उन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पे। इसके बाद में मैं एनसीएसएम की पूरी टीम, रमन साइंस सेंटर की टीम की, बहुत छोटे समय में इन्होंने पूरी एग्जीबिशन को, ये हिंदी और इंग्लिश में था वहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने पूरे मराठी में किया और यहाँ पे अपडेट किया। तो यहाँ की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियाँ, जो उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन है 600 स्क्वायर फीट की, उसको करने के लिए काफ़ी समय जाता है। तो मैं वहाँ पे उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो कवर करेंगे इस इवेंट को। और ख़ास करके आप जो बच्चे यहाँ पे आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, इस एग्जीबिशन में आए यहाँ पे। और मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रोपगेट करें, लोगों को बताएं। ऐसे बहुत से स्टोरीज है, बहुत से एक्टिविटीज़ इसमें होंगे, तो आपको आगे से मतलब आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ पे आएँ, पार्टिसिपेट करें और छोटी छोटी स्टोरीज इसके बारे में जानें, समझें। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आपके बीच में कोई वायरलिस्ट निकल के आए जिसने कोई वैक्सीन का निर्माण किया हो। तो एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के साथ मैं थैंक यू, जय हिंद। Thank you very much, sir. I announce that the program is over. Thanks a lot. Have a wonderful day. Thank you. एग्जीबिशन के बारे में क्या डिटेल में बताना चाहोगे आप नागपुर के लोगों को? नागपुर के रमन साइंस सेंटर में ये वैक्सीन्स के बारे में जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, इसमें वैक्सीन्स के बारे में तो पूरी ही जानकारी है और बहुत अच्छी और डिटेल में जानकारी है। सिमिलरली अभी जो कोविड-19 आया था, उसमें ये वैक्सीन्स कैसे बनाए गए, उसका इम्पोर्टेंस क्या था और ये वैक्सीन्स इमरजेंसी में कैसे बनाए गए और कहाँ वो मैन्युफैक्चर हुआ और उसका बेनिफिट कैसा सब पेशेंट्स को मिला, इसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल में जानकारी है। सिमिलरली ये वैक्सीन्स की ये कब से वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए, ये कैसा ध्यान में आया और वैक्सीन्स का क्या महत्व है और ये इन्फेक्शंस के बारे में कैसा कॉम्बैट करता है और इससे कैसा एडवांटेज मिलता है पेशेंट्स को, इस सब के बारे में बहुत डिटेल एग्जीबिशन है। सिमिलरली इन्होंने एक मोबाइल वैन भी निकाली है जो कि काफ़ी नागपुर की तालुका प्लेसेस में जा कर के लोगों के बीच में अवेयरनेस ये करेंगे और उसका काफ़ी स्टूडेंट्स को और लोगों को उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने अभी तक ये कहाँ इसका खुल चुका है वैक्सीन को लेके अवेयरनेस, और कहाँ खुलने वाला है? ये मैं पहले बार देख रहा हूँ कि ऐसे सॉर्ट ऑफ एग्जीबिशन और जो जिसकी थीम है कि इंजेक्टिंग होप, वैक्सीन्स आर देयर इंजेक्टिंग होप, ऐसी थीम मैं पहले बार देख रहा हूँ। अदरवाइज वैक्सीन्स के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। वो जब ये कोरोना के वक्त ही कोविड-19 में लोगों को वैक्सीन क्या चीज़ है ये समझ में आया है, पर अदरवाइज वैक्सीन के बारे में लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है और ये अवेयरनेस ये एग्जीबिशन के थ्रू लोगों को समझेगा और वो अवेयरनेस आना बहुत ही ज़रूरी है। सर क्या कहना चाहोगे नागपुर के लोगों को एग्जीबिशन के बारे में? लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोविड पैंडेमिक हम सब ने देखा है और कोविड के सब में छोटा मोटा सबके इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन ये कोविड का वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम में जो बना है, इसकी जो पूरी कहानी है और कितना साइंटिफिक तरीके से ये बनाया गया, कितना सेफ है, इसकी सारी कहानी इस एग्जीबिशन में है, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब एक वायरस को समझना, वायरस पे रिसर्च करना, वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना, केमिकल्स उसमें ऐड करवाना और बहुत बड़े पैमाने पे वैक्सीन बनाना और वो लोगों तक पहुँचाना, एक बहुत बड़ा काम होता है और इतने शॉर्ट टाइम में ये काम किया गया है। और ये सारा जो इसका वृत्तांत हम कहेंगे कि वायरस से लेके 2 साल की जो 11 महीने की कहानी है, यहाँ पे सारे मॉडल के साथ और सारे जानकारी के साथ यहाँ रखी गई है। ये जानकारी स्टूडेंट्स के लिए, इवन बड़ों के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायी रहेगी
और भविष्य में मैं ये कहना चाहूँगी कोई भी ऐसी आपत्ति आए तो उसके लिए डरना नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हर चीज़ का आंसर छिपा है और साइंस टेक्नोलॉजी के सहारे हम हर चीज़ पे मात कर सकते हैं। और आपको ये साइंस एग्जीबिशन यहाँ का देख के आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि किन किन लोगों ने पूरे बड़े लेवल पे इसको काम किया है और वायरस पे हमने जीत कैसे हासिल की है। और ये बहुत प्रेरणादायी इतिहास है, इसको ज़रूर देखें। मैं सभी नागपुर वासियों को, सभी बच्चों को, सभी बड़ों को भी यह कहूँगा कि आप जितना यहाँ ज़्यादा मात्रा में आके इसका नॉलेज ले सकें बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। धन्यवाद।